आजच्या व्हिडिओमध्ये गणपती अथर्व शीर्षाचा अभिषेक कसा करावा ह्याची माहिती बघणार आहोत। प्रथमतः कलश भरून घ्यावा, दीपक लावून घ्यावा आणि पूजेचं सामान जे व्हायचे ते तयार करून घ्यावा आणि ह्या कलशामध्ये असं ओम काढावं, ओंकार काढावा। गंगेचे, यमुनेचे व गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधू, कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु, अशा प्रकारे 7 गंगेला आव्हान करावं आणि हे जल या अभिषेक पात्रामध्ये टाकून घ्यावं। प्रथमतः शांती मंत्र म्हणावा। ओम भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षजत्रः, स्थिरेऽङ्गे तुष्टुवासः, तनुभिर्यमेष देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रा अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतय। तुमीव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि, तुमीव केवलं कर्तासि, तुमीव केवलं धर्तासि, तुमीव केवलं हर्तासि, तुमीव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि, तुम साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतुं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतुं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवनुचानवं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् पुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवधरात् सर्वतोमा पाहि पाहि समतात्। तुम वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, तुम आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मयः, तुम सच्चिदानन्दादित्योऽसि, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, तुम अज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि, सर्वजगदिदं तुम जायते, सर्वजगदिदं तुम तष्टमसि, सर्वजगदिदं त्वयेवसि, सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्यक्षि। तुम भूमिरापनलो नीलो नभः, तुम चत्वारि वाक्पदानि, तुम गुणे त्रियातीतः, तुम देहे त्रियातीतः, तुम कालत्रियातीतः, तुम मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, तुम शक्तित्रात्मकः, तुम योगिनो ध्येयन्ति नित्यं, तुम ब्रह्मं, तुम विष्णुं, तुम रुद्रं, स्थवं इन्द्रस्थवं, वायुस्थवं अग्निस्थवं, वायुस्थवं चन्द्रमास्थवं, ब्रह्मभुरोस्रोम गणादि पूर्वमुच्चर्य वर्णादि तदन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धदूलसीतं तारेण ऋदुं यततवमनस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्च अन्तरूपं, बिन्दुरूपं नादः, संधानं संहिता संधिः, शेषा गणेश विद्या गणक ऋषि, निचृत गायत्री छन्दः, गणपतिर्देवता। ओम गं गणपते नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्त चतुर्हस्त पाशाङ्कुशधरं वदञ्च वरदं, हस्तिबिभ्राणं शकोध्वजं, रक्तः लम्बोदरं शूर्पकर्णकं, रक्तवाससं रक्तगन्धाङ्गुलिप्तं, रक्तपुष्पैः सुपूजितं, भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणम् अच्युतम्, आयुर्भूतं च सृष्टिदयो प्रकृते पुरुषात् परं, यो ध्यायन्ति यो नित्यः योगी योगिनावरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय विघ्ननाशिने शिवसुताय, श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। इतद अथर्व शीर्षे अभिते सब्रह्मभूयाय कल्पते, स सर्वथा सुखमेगते, स सर्वविघ्नैर्ने बाधते, स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। सायंध्यानो दिवसकृतं पापनाशयति, प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापनाशयति, सायं प्रातः प्रयोजतो अपापो भवति, सर्वतर्ध्यानो अपविघ्नो भवति, धर्म अर्थ काम मोक्षं च विदन्ति। इदम् अथर्व शीर्षं न देयति, यदि मोहदस्यति स पापीयान् भवति, स सर्वतरात् यं काममधीन्ते तं तमनेक साधयेत। अनेन गणपति अथर्व शीर्षं स वाग्मी भवति, चतुर्थमनश्रम भवति, स विद्यावान् भवति इति अथर्व वाक्यं ब्रह्मद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचिन्निति। यो दुराङ्कुरेति स वैश्रणो भवति, यो लाजयेति स यशवान् भवति, स मेघावान् भवति,
यो मोदक सहस्रेण यजति सवंचित फलमवाप्नोति साध्य समिद्धि यजति सर्व लाभते अष्टभ्राम्यं निर्जित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यघ्रेण महानद्या प्रतिमा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सर्वविद भवति एवं वेदोपनिषदम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्यमाक्षजत्राः स्थिरांगे तुष्टुवासः तुन्भिव्यानेश देवहितं यदा युवों स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्तक्षरा अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम गणपतये नमः निगणपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिंगाय नमः ओम हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः ओम सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः ओम दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः ओम भवाय नमः भवलिंगाय नमः ओम शर्वाय नमः शर्वलिंगाय नमः ओम शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ओम ज्वलाय नमः ज्वललिंगाय नमः ओम ज्योतिषाय नमः ज्योतिर्लिंगाय नमः ओम आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः ओम परमाय नमः परमलिंगाय नमः ओम एतते सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगांग स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् ओम शांति शांति शांति। आता गणेशाची मूर्ती उचलून बाजूला घ्यावी। ही स्वच्छ मूर्ती दुसऱ्या ताटामध्ये ठेवून घ्यावी। आणि गणेशाला भस्म हळदी कुंकुम चंदन लाल चंदन लावून घ्यावं। अक्षदा व्हाव्या गणेशाला, दुर्वा व्हाव्या। दुर्वा वाहताना त्याचे शेंडे समोरच्या बाजूला करावे। 21 दुर्वाची पिंडी असेल तर ते व्हावी। माझ्याकडे तेवढे अवेलेबल नाही, जेवढा आहेत तेवढ्या दुर्वा मी वाहत आहे। गणेशाला लाल पुष्प वाहू। आणि साखर ठेवून गणेशाला साखराचा नैवेद्य दाखवावा किंवा मोदकाचा नैवेद्य दाखवावा। दर्शन घेऊन घंटानाद